बच्चों, प्रीवियस जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें प्रैक्टिस वर्कशीट सेट 2 एंड सेट 3 के क्वेश्चंस थे। ईच प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस के बनाती हूँ और मैं आपको 15 मिनट्स का टारगेट देती हूँ कि 15 मिनट्स में आप एटलीस्ट उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी आप ओलंपियाड के लिए जो टेस्ट आप देते रहे होगे या फिर आप आगे दोगे तो उसकी आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे। उसके सॉल्यूशंस को आज हम करते हैं। सेट पेपर 2 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। ये आपका प्रैक्टिस वर्कशीट ओलंपियाड क्लास 4 के लिए सेट 2। तो हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस ऑप्शंस में से कौन से ट्रू नहीं है। 34 इंटू 50 इक्वल टू 50 इंटू 34। Then students, we know that like a 3 into 2 or a 2 into 3, in a both situation we get a same answer, that is a 6. Same when we multiply 34 into 50 and 50 into 34, then we get the same answer. So this is a true options. Number 2, 50 into 34. So right here is a 50 into, here is a into. If you see no sign arithmetic operation is written, so this means is a t into, and you can we can write 34 as a 30 plus 4. Okay, so when you multiply 50 into 30, because we solve this question like this, 50 into 30 and then plus, and next terms is a 50 into 4. Okay, this is a 5 into 3 15, and you put the both 0 here like this, 1500, and 5 into 4 20 and 2, you get a 1700. Okay, similarly in a left side, when you multiply 34 into 50, you get a 1700. So this is also true option. Now option number 3, 55 into 12. So we can write 55 into 10 plus 2. This is also same as above of the option number 2. So this is also true because we get same solution in a LHS and RHS side. Okay, hope you understanding. Last option is a 12 plus 55, and here is a 10 plus 2 into 50 plus 5. Okay, then do carefully, there is a plus sign, so when we add 55 and a 12 we get a 67 only, but here is a 10 plus 2 into 50 plus 5, so this becomes a 12 and this becomes a 55, and after multiplication, you know, we get a something different, that is a very more than the 67, that will be, it is a 660. Now question number 2, in 50 filling the blanks 10 and 2 equal to 80. Okay, in a previous video, question paper practice set paper 2, I have given the question number 2. Then for the 50 filling the blanks 10 filling the blanks 2,
makes 80. Which arithmetic sign we will place here that will make 80? So think about it. If we write plus here, then 50 plus 10 becomes 60, and this is a minus. 60 minus 2 becomes 58. So this is not applicable. So this sign is a not true. Okay, so this is a incorrect. For we will check option 2. Option 2, if we place minus here, 50 minus 10 we get a 40, and then multiply 2. 40 multiply 2 we get a 80. So we have a option number 2. So right answer is a option number 2. Hope you understand. Okay. For the next question, since in these questions I don't need to be write the solutions, so only I am indicating or marking here. So please solve this type of questions for the IMO. Practice for the questions. And question number 3. Okay. If I need to write, then I will must be write in a notebook to make you understand. Okay. Question number 3. Arus has a 25 toffees. If he want to give 5 toffees to each of 6 friends, it means what? आरुष हैज़ 25 टॉफ़ीज़ मीन्स आरुष के पास 25 टॉफ़ीज़ हैं एंड ही वॉन्ट्स, वो चाहता है कि वो 5 टॉफ़ीज़ टू ईच ऑफ 6 फ्रेंड्स, अपने हर एक फ्रेंड्स को, अपने हर एक 6 फ्रेंड्स को वो 5 टॉफ़ीज़ दे. ओके, बट देन क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी मोर टॉफ़ीज़ ही नीड्स, देन हाउ विल वी आंसर इट. Arus only has a 25 toffees and he wants to give his 6 friends 5 toffees each. So total toffees जो उसे चाहिए अपने 6 दोस्तों को देने के लिए वो आपके 6 into 5 हैं. एक बच्चे को उसने 5 देने हैं और उसके 6 फ्रेंड्स हैं तो उसे टोटल 30 टॉफीज चाहिए. 30. ओके, but only he has a 25. Only he has 25. उसके पास सिर्फ 25 टॉफीज हैं और उसे 30 टॉफीज चाहिए. ओके, देन क्वेश्चन इज हाउ मोर टॉफीज ही नीड्स. मोर मीन्स स्टूडेंट्स, मोर मीन्स और उसे कितने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ही हैज़ अ 25, then he needs 30. So more toffees उसे only 5 चाहिए because 30 minus 25 आप करोगे तो only उसे 5 टॉफीज अपने दोस्तों के लिए चाहिए. ओके, तो he needs more के लिए आप 30 minus 25 करोगे तो only 5 टॉफीज उसे और चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्जिक्यूटिव टू इवन नंबर्स. स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स रिपीटेड नंबर, और हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ तो 2 नंबर जो लगातार आते हैं, जैसे कि आप समझो 2 नंबर लगातार 2 3 3 4 4 5 6 7 100 101, 2 लगातार नंबर. बट देयर इज अ क्वेश्चन डेट कॉन्जिक्यूटिव टू इवन नंबर. इवन, देन व्हाट इज द इवन नंबर? सिंस यू आर एन स्टैंडर्ड 4, so you should know the what is the even number. Even number at numbers, those numbers which ones place come with a 0, 2, 4, 6 and 8. Okay. Here in a option all 3 are the even numbers, 2 4, 2 6, 4 8. But which one is a 2 even consecutive number?
if we take a 2 6, then we are missing here 4. In between 2 and 6 we have a 4 as an even number, and if we take a 4 and 8 we miss 6 as a even number, so they are not a consecutive. इनके बीच में भी एक नंबर है, इसलिए हम इनको consecutive numbers, consecutive even numbers नहीं बोल सकते. But when we take a 2 and 4, there is a no other even number between them. So option is a 2 and 4. So our right answer is a 4. Hope you understand. Now next question is what? Question number 4. Which of the following show the common factor of 52 and 13? Okay. So this is a very easy, because already you know the how you find the factors. So it is easy to find the common factor. Let see. 52 and 13. 52 factors are a 1, because you know that every number has a factor 1 and number itself, and others are like a 52 can be divided by 2, so 2 is also factor of 52. 26. Now 2 and 26 both are the factor of a 26. Okay. Now 52 divided by 4, 13. So 4 and 13 is also factor of 52. Now come on 13. 13 is a prime number. 13 is a prime number. What is a prime number? Prime numbers means only two factor. Only two factors. Okay. Factors means what? Factors means a number which can exactly divide the given number. So 13 is only divided by 1 and 13 is only divided by 13 itself. So 13 we call 13 is a prime number. Okay. Now let we come on the point. What is the common factor of a 52 and 13? So common factor are 1 and 13. Okay. So our answer will be option number 2, 1 and 13. Okay. Hope you understand. Now question number 6. Product of 3 and second multiple of 7. Product means बच्चों, product means multiply. Product means multiply. So which product we want? Product of 3 and second multiple of 7. Then what is a second multiple of 7? What is a multiple? Multiple is a just table of that number. Like a product means already I told you multiply. 3 multiply second multiple of 7 is a 7 1 is 7, 7 2 is 14. So 14 is a second multiple of 7. And now product of 14 and 3 we have a 42. Right option for question number 6 is a 42. Now for question number 7. Which of the following number greater than 750 but less than 980? So let me check the all three options which comes between these numbers. Okay. So let you understand what is the value of a CD X 1. C means 100. C means 100 and D means 500 in a Roman numbers. Okay. So if C is a before than D,
it means it is a 500 minus 100, that is a 400. Okay, now comes this x means a 10, and this is a 6, this is a 6, and this is a 10, and CD is a 400. Okay, so what is the number, check it. 400 plus 10 plus 6, that is a 400. Sorry, this is a 4, very sorry बच्चों, दिस इज द 4 बिकॉज v के पहले आपका आया आई है, तो दिस इज अ 414. Okay, similarly we check a second option, C triple x, D for 500, C for 100, 600, again C 730. So this is a 730. So hope it is a between this and this. Let we check third option also, CML. C means 100, M means 1000. Okay, again C is a before than M, so it becomes a 900, and L means 50. Okay, so CML, this and this both are the between this and this number. So this first I written here as 730. I have written already double C by mistake, sorry, because this becomes a 730 and this also belongs to the option. So just I deleted one C and now it becomes a 630, and 630 comes between this and that. So we will take the option number 3. Okay, now question number 8. In question number 8, Tatsavi reads a book of 250 pages in a 5 days. Then how many pages she reads in a 2 days? Okay, so this is a very simple question. First, you have to find the how many pages she reads in a 1 day. For a 1 day, we simply divide 255 by 5. When we have to find for a lesser than days or a lesser quantity, then we divide. Okay, so we divide by 5 and we get a 51. We get a 51 pages for a 1 day. For a 1 day. So for 2 days, just multiply by 2. We have a 102 pages. That is the option number 3. Now, for a question number 9, which of the following is the least common factor of two consecutive even number? Two consecutive even numbers is again 2, 4. Okay, and least common factor is obviously we have to find the common factor of two consecutive even number, that is a 1 and 2, option number 1. Now I am common multiple of 4 and 5. So if we have to find the common multiple of, now my last question is what is the question? Question is, I am a least common multiple of 4 and 5. If we have to find the common multiple of two consecutive number, like in these questions 4 and 5, then we simply multiply the given number. So when we multiply 4 and 5, we get a 20. So our answer is a 20 and we select the option number 3. Now next 10 क्वेश्चन मैं सेट 3 में आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. अभी ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिंपल हैं. जिन बच्चों की मैथमेटिक्स काफ़ी वीक है वो इसे ट्राई कर सकते हैं और
डेली में आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऐसे मैं एवरी डे 10 क्वेश्चंस के साथ 10 क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशंस के साथ आऊँगी। तो आपको जो टाइम दे रखा है इसमें 10 to 15 मिनट्स में आप इसे अटैम्प्ट करो, ट्राई करो पूरी अच्छी तरीके से और करेक्ट सॉल्यूशंस के साथ आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर इस तरह से हमारी धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चंस को आपके जो हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मुश्किल देती जाऊंगी, जिससे कि आप फिर उसे कर पाओ। अभी तो फ़िलहाल मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस को ही रखा है। पहले आप इस खुद को चेक करो कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो स्टडी जो भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वो आपको समझ आया, पसंद आया, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट मेरी जो सेट 3 का क्वेश्चन पेपर एंड देयर सॉल्यूशंस आई विल कम विथ डैट, तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। और एवरी डे आपको इस तरह से सेट 10 क्वेश्चंस के सेट अवेलेबल होते हैं, आप उसे सॉल्व करते रहो। और सॉल्यूशंस के लिए ऑब्वियसली मैं आपको दूसरी वीडियो में वो देती रहूँगी, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी वो आप तक पहुँच पाएगी। ओके, बाय बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड एंड डू योर बेस्ट फॉर द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।